Good morning, students. So before starting our today's class, let us quickly recap what we have studied yesterday. Okay. So now what we have studied today, that what do all acids and all bases have common? So all acids have H plus ions and these H plus ions are responsible for their acidic nature. Okay. सारे acids में H plus ion होता है और वही responsible होता है उनके acidic nature के लिए. Okay, now what about bases? All bases have OH minus ion and this OH minus ion is responsible for their basic nature. सारे bases के पास में OH minus ion होता है and this hydroxide ion is responsible for their basic nature. Okay, so yesterday we have studied about the indicators. Indicators are the substances which change their color, smell in different types of substances. Here substances mean acid and bases. Okay, तो एस इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा बेस है. ओके, सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर्स इज द फर्स्ट वन. सो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये नेचर में फाउंड होते होंगे प्लांट्स में. ओके, सो फर्स्ट वन इज लिटमस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लिटमस इन यस्टरडेज क्लास एंड टर्मरिक विच इज कॉल्ड हल्दी. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड कैटेगरी विच वाज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये नाम से ही पता चल रहा है. सिंथेटिक मतलब क्या? जो हम लोग खुद से बनाते हो या फिर जो नेचर में फाउंड ना होता, जो नेचर में नहीं मिलता हो. ओके, सो मिथिलीन ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में कैसा होगा? वो रेड होगा. बेस के कांटेक्ट में कैसा होगा? येलो होगा. एंड नेक्स्ट वन इज फिनोफ्थलीन. ओके, फिनोफ्थलीन इटसेल्फ इज कलरलेस एंड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एसिड इट रिमेन्स कलरलेस ओनली. And as soon as it comes in contact with the base it turns pink in color. Okay, now we are moving on towards the next type of indicator which is olfactory indicators and we will study in detail about this indicator today. Okay, so what are olfactory indicators? Olfactory indicators are the, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम देख रहे थे इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर रहे थे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द चेंज इन स्मेल ऑल्सो. ओके, सो olfactory इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल को चेंज करते हैं. ओके, these substances have different smell. Okay, different smell in acid and bases. Okay, have different smell in acid and bases. Okay, in acid and bases. Okay, so we are going to study the examples. Acid and bases. Okay, so first one is vanilla essence. Okay, so first one is vanilla essence. ये हम लोगों ने घर पे यूज़ भी किया हुआ है इन मेकिंग ऑफ केक एंड अदर थिंग्स. ओके, सो वनीला एसेंस का क्या होता है? जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है. ओके, when it comes in contact with the acid the smell of vanilla essence increases. Okay, and as soon as it comes in contact with the bases its smell disappears. Okay, उसकी smell गायब हो जाती है. Okay, and now the another one is clove oil. Another example is clove oil. So what do we call this clove in Hindi? Long बोलते हैं इसको. Okay, so when it comes in contact with the acid its smell increases. Okay, enhances. And when it comes in contact with the base its smell decreases. Okay, डिक्रीजेस. ओके, सो वनीला एसेंस के केस में क्या था कि स्मेल एसिड के कांटेक्ट में इनहेंस होगी और बेसिस में वो डिसअपेयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी. ओके, एंड क्लोव ऑयल के कांटेक्ट में क्या होगा? एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो स्मेल इंक्रीज हो जाएगी और इसमें स्मेल डिक्रीज हो जाएगी या घट जाएगी. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सॉल्ट. So here our topics of acid and bases ends here. Okay, so now only one more subtopic is remaining, that is universal indicators, that I will tell you later. Okay, so now we are starting towards the our new main topic which is salts. Okay, so salts, how are they formed? Okay, so salt is a ionic compound formed by the neutralization reaction. Okay, salts are formed by neutralization reaction.
neutralization reaction. They are ionic in nature. Okay, we have studied about the neutralization reaction. Neutralization reaction क्या होता है? In which when acid and bases react to give salt with the removal of water. Okay, so how salts are formed? Now, acid plus base reacts together and forms salt with the removal of water. Okay, here I am going to take quickly one example. HCl is a hydrochloric acid and NaOH is a base, and see, NaCl is formed with the removal of water. Okay, so now this one is hydrochloric acid, and this one is sodium hydroxide, and this one is NaCl salt. Okay, sodium chloride. Okay, so these are in these manner they are formed. Okay, now we will study about the chemicals from salt. Okay, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि सॉल्ट से कौन कौन से हम लोग केमिकल बनाते हैं. ओके, सो केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट. सॉल्ट से हम लोग जो केमिकल्स बनाते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. So first one is sodium hydroxide. So how sodium hydroxide is formed? When electricity is passed through the aqueous solution of common salt, which is NaCl. Okay, so this is the theoretical portion. When electricity is passed through the aqueous solution of NaCl, which is common salt of sodium chloride. Okay, तो इस aqueous solution को हम लोग हिंदी में उसको एक और नाम से जानते हैं, that is brine. Okay, so aqueous solution of NaCl is also called as what? Brine. Okay, so when electricity is passed through the aqueous solution of NaCl or brine, it decomposes to form NaOH, that is sodium hydroxide. Okay, it decomposes to form sodium hydroxide. So now I am going to write the reaction. NaCl plus water, which is the aqueous solution itself. Okay, so it reacts to give us what? NaOH with the removal of chlorine gas and the hydrogen gas. Okay, with the evolution of chlorine and the hydrogen gas. Okay, so let us balance this equation. Okay, now it is balanced. So how will you learn this reaction? When electricity is passed through the aqueous solution of NaCl, that is sodium chloride or brine, then NaOH is formed with the evolution of chlorine gas and the hydrogen gas. Okay, so few points are important to remember. Okay, so chlorine gas is liberated at anode. Okay, क्लोरीन गैस कहाँ पे लिबरेट होती है? एनोड पे. ओके, एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड. ओके, एंड दिस sodium hydroxide collects near cathode.
ओके, सो हाइड्रोजन कहाँ पे लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड वेयर, एट विच पॉइंट? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट H2 gas at cathode and Cl2 gas at anode. Okay, and NaOH collects near cathode. Okay, so these are the few important points in this. Okay, so tomorrow we will study about the uses of sodium hydroxide. Okay, we will study about the uses of sodium hydroxide. Till then, goodbye students.